Last time we developed the small signal approximation, and based on that approximation, we concluded that if the small signal approximation is valid, all branch currents and node voltages can be written as sum of DC and AC contributions. So we established that for each branch current and node voltage. For example, collector current के केस में हमने कहा था कि total current is DC contribution plus the AC contribution, where AC contribution we said can be written as GMVBE for an NPN transistor, and similarly बाकी currents के लिए भी IB के लिए, IE के लिए, collector voltage के लिए we can write each voltage and current as sum of DC and AC contribution. So जो relations हमने establish की थी वो आपके पास थी IC is equal to GMVBE, IB is equal to VBE divided by R pi, and IE is equal to VBE divided by RE. So ये तीन relations थी जो हमने कहा था कि AC conditions में BJT will follow when it is operating in active mode under the small signal approximation. So IC is GMVBE, IB is VBE by R pi, IE is VBE divided by RE, where GM can be given as IC divided by VT, R pi can be given as beta over GM, and RE can be given as alpha over GM. So ये working हमने last time की थी. Let's now utilize these three equations and develop equivalent circuit models. So equivalent circuit models हम उन circuits को कहेंगे जो उन तीनों equations को satisfy कर लें. So हम systematically चलेंगे. We'll start with when we start with equation 1 and equation 2 and verify equation 3, we are able to develop the pi model. And if we start with equation 1 and equation 3 and verify equation 2 later, we end up with the T model. So इसको जरा formally करके देख लेते हैं. Let's start with hybrid pi model. So the three equations that we have are IC is equal to GM VBE, IB is equal to VBE divided by R pi, which can be represented as Ohm's law, and IE is equal to VBE divided by RE. So these are the three equations that we have, and we are going to work with these three equations to develop two equivalent circuits or models for a BJT. एक को हम pi model कहेंगे, एक को हम T model कहेंगे. So let's first develop the pi model. तो pi model के लिए हम कौन सी हम equation 1 और equation 2 को utilize करते हैं. Equation 1 देखिए, equation 1 में हमें क्या बताया जा रहा है कि collector current is related to base emitter voltage. So collector current is defined in a different branch while base emitter voltage is defined in a different branch. So same branch के current voltage की बात नहीं की जा रही, बल्कि different जगहों की बात की जा रही है, which means the only tool that we have to model this type of behavior is a dependent source. So dependent source की क्या value होनी चाहिए? It should be GM VBE, और इसकी direction क्या होनी चाहिए? It should be in accordance with an NPN transistor. So NPN transistor के केस में emitter emits electrons, collector collects them. So electrons are flowing from emitter to collector, which means current must be in the opposite direction into the collector out of the emitter. So ये पहली equation हुई. पहली equation में हमने कहा कि we need a dependent source to model that first equation. Second equation देखें. Second equation में हमें बताया जा रहा है कि base current is determined by base emitter voltage and the relation is Ohm's law. कोई resistor है जो कि इनको relate कर रही है. So if we are able to ensure कि एक resistor है आपके पास जिसके through current जो है that is IB, अगर आप ये ensure कर सकें कि उसके through current जो है वो IB है और उसके cross voltage जो है वो VBE है, so then you can see that कि ये just Ohm's law है, एक resistor से आप represent कर सकते हैं इस equation को. So by Ohm's law we have ensured कि R pi का resistor है, उसके cross voltage VBE है और उसके through current जो है वो IB है. So this is the base voltage, और अगर आपने ensure करना है कि इसके cross current जो है voltage जो है VBE है, तो that means this node must be the emitter node. So this must be emitter, तभी ये VBE आएगा आपके पास R pi के cross. So again हमने क्या किया, हमने equation 1 को dependent source के तौर पे represent किए,
इक्वेशन 2 को हमने ओम्स लॉ के तौर पे रिप्रेजेंट की है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से हमने मॉडल डेवलप की है। सो मॉडल विल बी वैलिड इफ एंड ओनली इफ इक्वेशन 3 इज आल्सो सेटिस्फाइड। सो वी मस्ट बी एबल टू सेटिस्फाई इक्वेशन 3 अगर हमने कहना है कि ये एक वैलिड सर्किट मॉडल है फॉर एन NPN BJT ऑपरेटिंग इन एक्टिव मोड अंडर द स्मॉल सिग्नल अप्रॉक्सीमेशन, तो we must be able to satisfy this equation 3. So let's analyze this circuit. Let's apply KCL at the emitter node and determine a relation IE. So emitter को देखिए, emitter node को अगर हम analyze करें तो there are two currents entering the node. One is this one and the other one is GM-VBE, and there is one current exiting the node which is IE. So IE must be equal to this current GM-VBE plus this current जो कि इस रजिस्टर आर पाई की वजह से, जो कि बाय ओम्स लॉ यू कैन राइट इट एज VBE डिवाइडेड बाय आर पाई। सो हमने इस सर्किट के ऊपर, इस नोड E के ऊपर हमने अप्लाई किया KCL एंड वी डिटरमिन अ रिलेशन IE इज इक्वल टू GM-VBE प्लस VBE बाय आर पाई। सो VBE को हम कॉमन ले लेते हैं, GM प्लस 1 बाय आर पाई। बिकॉज R pi is equal to beta over GM. So let's make this substitution. We have IE is equal to VBE GM प्लस यहाँ पर R pi को सब्स्टिट्यूट करते हैं, R pi is beta over GM. So 1 by R pi must be GM over beta. So GM over beta. So GM VBE 1 plus 1 over बीटा। सो इसमें हम अगर बीटा को कॉमन ले लें तो बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा। सो बाय डेफिनेशन रिकॉल करें अल्फा इज बीटा बाय बीटा प्लस 1। सो दिस पेरेंथेसिस में जो चीज़ है दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 ओवर अल्फा। सो GM VBE डिवाइडेड बाय अल्फा, बट अल्फा ओवर GM इज RE, so this must be equal to VBE by RE because RE is equal to alpha over GM. So you note करें this is exactly equation number 3. So IE is equal to VBE by RE आपने end पे verify कर लिया। So again हमारा क्या टास्क था यहाँ पर, we wanted कि एक equivalent circuit हमें मिल जाए जिसको हम as a model use कर सकें later on analysis में। That model must be able to satisfy all these three equations. So we noted the first equation represents a dependent source. Second equation can be used to represent Ohm's law. So we started by utilizing equation 1 and equation 2. We developed a model and then we performed the analysis on that model and verify equation 3. तीनों equations का satisfy होना जरूरी है. Then and only then we can say that this is a valid circuit representation for these three equations. So this circuit does represent these three equations and this circuit does satisfy these three equations. So this circuit is a valid circuit model for an NPN BJT operating in active mode under the small signal approximation. So ये एक तरीका था जिसमें हमने इक्वेशन 2 को ओम्स लॉ से रिप्रेजेंट किया। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि इक्वेशन 3 को इंस्टेड ओम्स लॉ से रिप्रेजेंट किया जाए। So that will lead us to the T model. So let's repeat that. इसको करके देखते हैं। IC is equal to GM VBE, IB is equal to VBE over R pi, IE is equal to VBE over RE. So we have equation 1, we have equation 2, we have equation 3. So अब T मॉडल की डेवलपमेंट के लिए हम थोड़ा चेंज करेंगे। हम कहेंगे कि लेट्स यूज इक्वेशन 1 तो हमने यूज करनी है, उसे डिपेंडेंट सोर्स से रिप्रेजेंट करना है, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग इक्वेशन 2 एज ओम्स लॉ यूज इक्वेशन 3 एज ओम्स लॉ। सो इक्वेशन 3 को ओम्स लॉ के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो इक्वेशन 1 इज अ डिपेंडेंट सोर्स। अगेन करंट की डायरेक्शन इज इन अकॉर्डेंस विद द NPN ट्रांजिस्टर GM VBE. This is collector, so current should be into the collector because electrons are flowing from emitter to collector and current is flowing in the opposite direction for an NPN transistor. अब इक्वेशन 3 को ओम्स लॉ के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो इक्वेशन 3 के लिए RE लिखें। यू नीड टू इंश्योर कि RE के क्रॉस जो वोल्टेज है वो VBE है और RE के थ्रू जो करंट है अकॉर्डिंग टू पैसिव साइन कन्वेंशन दैट मस्ट बी IE।
So this is the emitter terminal, and to ensure VBE RE के cross RE हो, this must be the base terminal. So again we utilized equation 1 and represent it as a dependent source. We utilize equation 3 and represent it as Ohm's law, ensuring that VBE is the voltage across the resistor RE and IE is the current through the resistor RE, and also the passive sign convention is being followed. So that gives us an idea that this terminal must be the base terminal. So equation 1 and equation 3 has been satisfied. The only equation left is this equation 2. So to see कि equation 2 satisfy हो रही है कि नहीं, let's apply KCL at the base node. So KCL at base, current की जो polarity है base current की वो ये होनी चाहिए. This is in accordance with NPN transistor. NPN transistor में current is flowing into the base terminal. So by KCL you can see that there is one current entering the node GMVBE. There is another current entering the node IB. IB is the current entering the node. GMVBE is the current entering the node. While this current IE or VBE by RE is the current exiting the node. So this is the current exiting the node. So we can rewrite it as IB is equal to VBE by RE minus GMVBE. So VBE को आप कॉमन ले सकती हैं, 1 by RE minus GM. Using RE is equal to alpha over GM, we can rewrite it as VBE GM over alpha, because RE is alpha over GM, or we can rewrite it as VBE GM 1 over alpha minus 1 over alpha minus 1. Since alpha is beta by beta plus 1, so ये जो parenthesis में चीज़ है, it can be written as alpha is beta by beta plus 1. So beta plus 1 by beta is 1 over alpha minus 1. So beta plus 1 minus beta divided by beta. So this is equal to 1 over beta. So 1 over alpha minus 1 is equal to 1 over beta. Let's make this substitution here. VBE GM over beta. But we know that beta over GM is R pi by definition. So this must be equal to VBE by R pi. So you note करें, this is exactly the same equation as equation 2. IB is equal to VBE by R pi. So this is equation 2. So we can safely conclude now that this is a valid circuit model for these three equations. इसको हम T model कहते हैं. It does satisfy all the three equations. IC is equal to GM-VBE, IE is equal to VBE by RE, and IB is equal to VBE by R pi. So ये circuit चूँकि आप तीनों equations को satisfy करते हैं, so this is a valid circuit representation for these three equations for an NPN BJT operating in active mode under the small signal approximation, क्योंकि ये इन तीनों equations को satisfy करता है. So इसको हम T model कहते हैं. जी ये ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो इस डेवलपमेंट में? जी टी मॉडल और पाई मॉडल ठीक है, क्लियर है? ओके, सो हमने इन तीन इक्वेशन से स्टार्ट किया और हमने दो इक्विवेलेंट सर्किट्स विच वी कॉल पाई मॉडल एंड टी मॉडल इनकी मदद से डेवलप किए. एंड वी हैव आल्सो प्रूव दैट कि दोनों मॉडल्स जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं. सो ये पाई मॉडल की डेवलपमेंट हमने कर ली है. सो पाई मॉडल जो अभी हमने डेवलप की है वो है आपके पास वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन. So you have some voltage VBE that determines the value of this dependent source. So VBE is the primary parameter that controls the value of this dependent source, GMVBE. So this is a voltage controlled current source representation. इसके एक और variation भी possible है. Instead of saying that VBE is the primary parameter, you can also argue that IB is the primary parameter
and express this value instead of in terms of VBE करने के बजाय you can express it in terms of IB. So उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए we can write it as VBE is equal to R pi times IB. Make this substitution here. This can be written as GM R pi IB, but R pi is equal to beta over GM, which implies that GM R pi is equal to beta. So this can be written as beta IB. So we are saying कि अगर हम प्राइमरी पैरामीटर IB को ले लें तो डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू को IB की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू बीटा टाइम्स IB. सो ये आपके पास करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, जिसमें आप कहते हैं कि आपका प्राइमरी पैरामीटर जो है वो IB है, and the value of the dependent source has been expressed in terms of that primary parameter IB, and the value is beta IB. So this is your current controlled current source representation of the same pi model. So हमने pi model ही की बात की है. pi model की आपके पास voltage controlled current source representation भी possible है अगर आपका primary parameter main parameter VBE है, और आपके पास current controlled current source representation भी possible है अगर आप primary parameter को IB लेकर चलते हैं. The same argument can also be applied for T model as well. T model के केस में भी जो अभी तक हमने डेवलपमेंट की है वो आपके पास वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन की थी, और जो आप उसको करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये अभी हमने मॉडल्स डेवलप किए हैं, पाई मॉडल विच आर स्मॉल सिग्नल मॉडल्स. अगर आप रिकॉल करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लार्ज सिग्नल मॉडल्स भी डेवलप किए थे. लार्ज सिग्नल मॉडल्स आर जेनेरिक एंड एनी इनपुट कैन बी अप्लाइड टू देम. वो आपके ऑलवेज ट्रू है एज लॉन्ग एज BJT is operating in active mode. Large signal models are non-linear and they can be utilized to solve any problems as long as the BJT is operating in active mode. Small signal models are only applicable if small signal approximation is valid, and they are linear models, and small signal model are only for AC analysis. इसमें जस्ट आप AC है, तमाम आप नोट करें तो ये वोल्टेज V is lowercase, BE is lowercase, तो तमाम voltages and currents are basically AC voltages and currents. So T model के केस में भी हमने voltage controlled current source representation अभी develop की है, and we verified कि it satisfy all the three equations for the small signal approximation. Now we have already developed voltage controlled current source representation where we set the primary parameter is VBE and the value of the dependent source has been expressed in terms of that VBE. If we instead take IE as the primary parameter, then we will have to express the value of the dependent source in terms of that IE. So by Ohm's law here, one can see that VBE is equal to IE times RE. So let's make this substitution here. GM IE RE, but we know that RE is equal to alpha over GM, or GM RE is equal to alpha. So that means this is equal to alpha IE. So value of the dependent source is alpha IE. So we are saying कि अगर आप प्राइमरी पैरामीटर यहाँ पर IE ले लें और डिपेंडेंट सोर्स को IE की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें, तो the value of the dependent source will be alpha IE, and that representation will be called current controlled current source representation of the T model. तो दोनों T models की दो representations हैं, a voltage controlled current source representation and the current controlled current source representation. So again, large signal models हमने already develop किए थे. They were very generic and are applicable for any sort of input signal. इसमें कोई वो restriction applicable नहीं है कि उसे small होना चाहिए amplitude को and so on. They are generic models. As long as the BJT is operating in active mode, they can be applied. But the difficulty in these models is that they are non-linear models, so they are difficult to apply. इसमें आपके पास diode भी है, इसमें आपके पास ये exponential characteristic भी है. Small signal models, on the other hand, are only applicable under the small signal approximation, and they only deal with
AC वेरिएशंस, AC सिग्नल्स। तो वो उस तरह से जेनेरिक नहीं है, जस्ट स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। Let's now extend these ideas to a PNP transistor. So NPN transistor के लिए भी हमने डेवलप की। Now we would like to extend the idea to a PNP transistor. रिकॉल करें PNP ट्रांजिस्टर में हमने डुअलिटी प्रिंसिपल की बेसिस पे उन रिलेशंस को यूज़ किया था। तो यहाँ पर NPN के लिए वो थी आपके पास IC इज इक्वल टू GM VBE। तो PNP के लिए क्या होना चाहिए? GM VEB, बिकॉज PNP के केस में तमाम वोल्टेजेस की पोलैरिटीज, तमाम करंट्स की पोलैरिटीज ऑपोजिट होंगी। सो फॉर अ PNP ट्रांजिस्टर IC इज इक्वल टू GM VEB, IB इज इक्वल टू VEB divided by R pi, and IE is equal to VEB divided by RE. So आपके पास सिमिलर तरह की इक्वेशंस हैं, जस्ट आपने वोल्टेजेस और करंट्स की पोलैरिटीज का यहाँ पर ख्याल किए। तो VBE की जगह आपने VEB लिख दिए। एंड ऑल्सो वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग हियर कि IC, IB और IE की डायरेक्शंस भी आप PNP ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग है। सो PNP ट्रांजिस्टर में होल्स travel from emitter to collector. Emitter emits holes, collector collects them. So the conventional current is also in the same direction. Current is traveling into the emitter, out of the collector terminal. So ये जो polarities of these currents हैं वो भी in accordance with the physical operation of a PNP transistor है। So again, using equation 1 and equation 2, we can develop the pi model. So let me draw the PNP transistor here. So let's say कि PNP ट्रांजिस्टर आपके पास इस ओरिएंटेशन में है। So ये आपके पास emitter टर्मिनल है, this must be the collector, this must be the base. So यहाँ पर आप ड्रॉ कर लेते हैं। Equation 1 is a dependent source, और जिस तरह हमने बात की है कि current is flowing into the emitter, out of the collector. So अगर आपके पास if this is the collector terminal, so this must be IC, this must be GMVEB. Equation 2 क्या बताती है कि we have Ohm's law. So Ohm's law R pi VEB. This is the base terminal. This must be the emitter terminal. So this is the emitter terminal and this is the current IB. So this must be IE. So we have developed this pi model based on equation 1 and equation 2. And we can also satisfy equation 3 as well. तो ये आप करके देखेंगे। यहाँ पर अगर आप KCL अप्लाई करेंगे तो you will find out कि IE is actually equal to VEB by R pi, and as a consequence this is a valid circuit model for a PNP transistor operating in active mode under the small signal approximation. T मॉडल आप किस तरह से बना सकते हैं PNP ट्रांजिस्टर के लिए? उसमें you again have a dependent source of value GM VEB, collector. Equation 3 represents a resistor RE और उसके across voltage should be VEB. This is emitter terminal, this must be the base terminal, this is IE, this is IC. यहाँ पर नोट कीजिए, चूंकि मैंने यहाँ पर एमीटर ऊपर ड्रॉ किए तो इसलिए मैंने सर्किट्स भी उसी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। जिस ओरिएंटेशन में आप बीजेटी को ड्रॉ हुआ है उसी ओरिएंटेशन में आप उसका इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ करें। हमेशा कलेक्टर में आप यहाँ मॉडल से हमें पता लग रहा है कि कलेक्टर में वी हैव अ डिपेंडेंट सोर्स, और बेस में लुकिंग इनटू द बेस वी फाइंड आउट कि आर पाई है अगर आप पाई मॉडल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप टी मॉडल यूज़ करें तो अगेन कलेक्टर में आपने डिपेंडेंट सोर्स अप्लाई करना है और एमीटर के साथ एसोसिएटेड आपको स्मॉल आर ई रजिस्टर नज़र आता है। सो अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ द गिवन सर्किट आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इसके मुताबिक चलें। एमीटर टर्मिनल में हमेशा आपने आर ई ड्रॉ करेंगे, कलेक्टर टर्मिनल में हमेशा आप डिपेंडेंट सोर्स कलेक्टर साइड पे आप ड्रॉ करेंगे। सो मेक श्योर कि आप सर्किट की ओरिएंटेशन के मुताबिक अपना इक्विवेलेंट सर्किट या स्मॉल सिग्नल मॉडल को ड्रॉ कर रहे हैं। सो ये आपके पास
PNP ट्रांजिस्टर के लिए you get these equivalent circuits. सो PNP ट्रांजिस्टर के लिए इट्स आपके पास ये सर्किट आ गया, पाई मॉडल आ गया, एंड दिस वन इज द टी मॉडल. सो अभी तक जो हमने डेवलप किए हैं पाई मॉडल और टी मॉडल अंडर द स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन फॉर अ PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर, उसमें तमाम पोलैरिटीज ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट्स हमने रखी हैं अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक डिवाइस, कि एक्चुअल डिवाइस में किस तरीके से करंट्स फ्लो करते हैं, किस तरीके से वोल्टेजेस अप्लाई की जाती हैं, उसकी बेसिस पे हमने इक्वेशंस लिखी हैं और उनकी मदद से मॉडल्स डेवलप किए. मैथमेटिकली these models for a PNP transistor and NPN transistor are actually the same. We can show that they are equivalent. So ये जो ऊपर हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल्स अप्लाई किए हैं for an NPN transistor, they can be applied to solve a problem of a PNP transistor and vice versa. Although that is less intuitive and I will not recommend it, but for the sake of completeness, we can show that कि जो हमने PNP ट्रांजिस्टर के लिए ये मॉडल डेवलप की है, it's mathematically the same as the one we have developed for an NPN transistor. But I will still advise you कि आप PNP ट्रांजिस्टर के लिए ये मॉडल यूज करें. It's more intuitive. It is in accordance with the voltage and current polarity of the actual device, so it makes much more intuitive sense. Or this model should be used for an NPN transistor, but mathematically they are the same. Mathematically ये models equivalent हैं, ये same है, and mathematically you can use this PNP model to solve a problem involving NPN transistors, and you can use this NPN model to solve the problem involving a PNP transistor. So mathematically they are equivalent, mathematically they are the same. So let's show that कि mathematically ये same है, again keeping in mind that it's more intuitive to use this circuit A for a PNP transistor and this circuit D for an NPN transistor, and I will recommend कि आप इसी तरीके से इनको यूज करें. लेकिन अगर आप यूज कर लेते हैं NPN ट्रांजिस्टर को PNP प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इट विल बी लेस इंट्यूटिव बट मैथमेटिकली इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट्स. सो लेट्स सी कि ऐसा क्यों है, व्हाई दीज टू आर इक्विवेलेंट. सो इसको ये स्टेप्स करके हम देख लेते हैं. देखिए इसको फिगर बी कह दें, इसको फिगर सी कह दें. फिगर बी और फिगर ए में जस्ट उसको रीओरिएंट की है, द सर्किट इज द सेम, कोई पोलैरिटी हमने चेंज नहीं की. फिगर बी में देखिए स्टिल आपने फिगर बी में, फिगर ए में आपने VEB का प्लस डिफाइन किया है मीटर पे और बेस पे आपने माइनस साइन डिफाइन किया है. सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस इज डिफाइंड एट द बेस, प्लस इज डिफाइंड एट द एमीटर. करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर. जी हम बात कर रहे थे कि ये दोनों एक्चुअली इक्विवेलेंट हैं. ये हमने डेवलपमेंट की है फॉर अ PNP ट्रांजिस्टर, ये हमने डेवलपमेंट की है NPN ट्रांजिस्टर के लिए. ये सर्किट्स आर इक्विवेलेंट एक्चुअली. सो यहाँ पर फिगर बी में मैंने जस्ट इसको रीड्रॉ किया है विद अ डिफरेंट ओरिएंटेशन. सो यहाँ पर जस्ट हमने इसको रीओरिएंट किया है. सर्किट सी में आप देखिए, सर्किट सी में हमने किया है कि अगर आप इसकी पोलैरिटी को अपोजिट कर दें, VEB की अगर पोलैरिटी को अपोजिट कर दें तो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट अ नेगेटिव साइन हियर. सिमिलरली अगर आप इस करंट की पोलैरिटी को आप अपोजिट डायरेक्शन में प्लॉट करना चाह रहे हैं तो अगेन यू हैव टू इनकॉर्पोरेट अ नेगेटिव साइन हियर. बट माइनस VEB इज minus VE minus VB, or it is equal to VB minus VE, or it is equal to VBE. So you can see that कि यहाँ पर आप माइनस VEB की जगह VBE लिख सकते हैं, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस VEB की जगह आप VBE लिख सकते हैं. So what we can conclude from this figure is कि these models are actually the same. They are mathematically the same, but again let me emphasize कि it's more intuitive कि आप PNP ट्रांजिस्टर के लिए फिगर ए को यूज़ करें एंड NPN ट्रांजिस्टर के लिए आप
फिगर डी को यूज करें. It will be more intuitive, and this sort of equivalence does not exist for large signal models. This is only true for small signal models. So आपने लार्ज सिग्नल मॉडल्स के लिए भी इसी तरह ही रखना है. पीएनपी की डिफरेंट टोपोलॉजी है, एनपीएन की डिफरेंट टोपोलॉजी है. So I think it will be more intuitive and less confusing if you use the same trend for small signal models as well. That is figure A for to represent a PNP transistor and figure D to represent an NPN transistor. जी ठीक है, ये फिगर ये क्लियर है, देख सकते हैं सब लोग कि ये इक्विवेलेंट है. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टी मॉडल के केस में भी सेम इक्विवेलेंस वैलिड है. एंड अगेन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पीएनपी के लिए पीएनपी के मॉडल को यूज़ करें. फिगर ए इज़ रिकमेंडेड फॉर पीएनपी एंड फिगर डी इज़ रिकमेंडेड फॉर एन एनपीएन बीजेटी operating in active mode under small signal approximation. But one can show that these are equivalent. These are mathematically the same, and actually any of them can be used to solve a problem involving any type of transistor. So they are mathematically equivalent, mathematically the same. So अभी हमने डेवलप कर ली हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए भी मॉडल्स और पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए भी मॉडल्स. सो अभी तक हमने अर्ली इफेक्ट की बात नहीं की. एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए जो हमने मॉडल्स डेवलप किए हैं वो हमारे पास हैं पाई मॉडल, GMVBE, आर पाई आपको बेस में मिलती है, कलेक्टर में आपको एक डिपेंडेंट सोर्स मिलता है और मीटर टर्मिनल आपका इन दोनों के बीच में कॉमन आ जाता है. और हमने टी मॉडल डेवलप किए. टी मॉडल के केस में आपको मीटर में ये रेजिस्टेंस मिलेगी, इसके क्रॉस VBE. यहाँ पर कंट्रोल पैरामीटर शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड, अदरवाइज आपका मॉडल कंप्लीट नहीं है, आप उससे भी यूज़ करके सॉल्व नहीं कर सकते. सो मेक श्योर कि ऑलवेज यहाँ पर जो कंट्रोल पैरामीटर है आपका, जो प्राइमरी पैरामीटर है VBE, इसमें अगर आप वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं और करंट होगा, अगर आप करंट कंट्रोल करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, उसको आप क्लियरली इंडिकेट करें अपने मॉडल में. तो ये अभी तक हमने डेवलप की है. तो यहाँ पर अर्ली इफेक्ट आप रिकॉल करें, अर्ली इफेक्ट हमने स्टडी किया था. अर्ली इफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इफेक्ट, एंड दैट इफेक्ट वाज बिकॉज ऑफ जब आप CBJ के क्रॉस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते थे तो उसकी वजह से इफेक्टिव बेस विड्थ जो है वो घटती थी, इफेक्टिव बेस विड्थ रिड्यूस होती थी. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस आपके पास करंट का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नज़र आता था फॉर अ फिक्स्ड VBE. सो अगर हम इसको रिकॉल करें, हमने इस तरह का प्लॉट देखा था पहले भी, IC वर्सेस VCE प्लेन में हमने ये प्लॉट किया था और हमने कहा था कि दिस इज द रिप्रेजेंटेशन विदाउट अर्ली इफेक्ट. हाउएवर व्हेन यू हैव अर्ली इफेक्ट तो ये आपके पास एक्टिव मोड है. फॉर VCE greater than 0.3 volt you get the active mode. So active mode में you get perfectly horizontal lines for a fixed VBE. ये कोई VBE1 थी, ये कोई VBE2 थी. सो दिस इज विदाउट अर्ली इफेक्ट. जब आप अर्ली इफेक्ट नहीं देखते तो आप कहते हैं कि अगर VBE फिक्स्ड है तो IC फिक्स्ड है, IC चेंज नहीं हो रहा, IC की जस्ट वेरिएशन VBE के साथ है. एक पर्टिकुलर लाइन पे आप एक पर्टिकुलर VBE के लिए प्लॉट कर रहे हैं. सो फॉर अ फिक्स्ड VBE यू आर गेटिंग अ कांस्टेंट करंट IC. फॉर अ डिफरेंट VBE यू आर गेटिंग अनदर कांस्टेंट करंट IC. लेकिन अगर आप अर्ली इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो यू सी एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ करंट. तो जैसे जैसे VCE बढ़ता है तो यू गेट एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ करंट. तो इसको हम अर्ली इफेक्ट कहते हैं या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इफेक्ट कहते हैं. एंड इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि दीज लाइंस अपीयर टू ओरिजिनेट फ्रॉम सम कॉमन पॉइंट. सो किसी कॉमन पॉइंट से ये दे अपीयर टू ओरिजिनेट फ्रॉम सम कॉमन पॉइंट
they intersect the horizontal axis at some common point minus VA. So they appear to originate from this common point minus VA से originate होती हैं और ये आपके अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इफेक्ट का फिनोमेना है. So ये रिकॉल करें इस फिनोमेना को रिप्रेजेंट हम कह रहे थे कि since these are straight lines in IC versus VCE plane, so we can represent it as a resistor R0 और उसकी वैल्यू हमने निकाली थी VA divided by IC prime. Since this resistor is defined in IC versus VCE plane, so to incorporate this early effect into these models, this resistor must always be placed between collector and emitter terminals. So यहाँ पर आप collector और emitter terminal के बीच में इस resistor को place करेंगे और इधर भी collector और emitter के बीच में ही place करेंगे. अब T model में ये नहीं कहेंगे कि ये इस तरह मुश्किल हो जाएगा solve करना, तो I should place it somewhere else. You should always place this resistor R0 between collector and emitter terminals. It must be placed between collector and emitter terminals because it is defined in that way. R0 is defined in IC versus VCE plane, which means the voltage across R0 must be VCE. Collector emitter voltage R0 के cross appear होनी चाहिए, which means R0 must always be placed between collector and emitter terminals. तो जो हमने स्मॉल सिग्नल मॉडल सप्लाई यहाँ पर डेवलप किए हैं, बेशक वो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन में है या करंट कंट्रोल करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन में, पाई मॉडल है या टी मॉडल है, उनको इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है टू इनकॉर्पोरेट द अर्ली इफेक्ट. यू जस्ट हैव टू प्लेस अ रेजिस्टर बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर टर्मिनल्स और उस रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, दैट कैन बी गिवन एज R0 इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय IC प्राइम, वेयर VA इज द अर्ली वोल्टेज एंड IC प्राइम इज द करंट without early effect, यानी current at the very start of the active mode. यहाँ पर recall करें, for VCE greater than 0.3 volt we get active mode. For VCE in the range of 0.1 to 0.3 volt we get saturation mode. So at the very start जो आपकी boundary है between active and saturation, उस boundary के ऊपर जो value है 0.3 volt, उसके राइट साइड पे यू गेट एक्टिव मोड, उसके लेफ्ट साइड पे यू गेट सैचुरेशन मोड. सो ये आपके पास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो करंट की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड IC प्राइम. सो R0 इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय IC प्राइम. सो यू कैन इजीली इनकॉर्पोरेट द अर्ली इफेक्ट बाय जस्ट प्लेसिंग अ रेजिस्टर स्मॉल R0 बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर टर्मिनल्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन में भी R0 आपने कलेक्टर और एमिटर के बीच में लगाना है. द सेम इज ट्रू फॉर करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाई मॉडल एज वेल. तो जो सी भी रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, जो सा भी मॉडल आप यूज कर रहे हैं, रेजिस्टर R0 मस्ट ऑलवेज बी प्लेस्ड बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर बिकॉज इट इज डिफाइंड इन IC वर्सेस VCE प्लेन. एंड सिमिलरली टी मॉडल में भी आप देख लें, R0 को हमने कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट किए. So R0 must always be connected between collector and emitter terminals, whether it's pi model or T model or voltage controlled current source representation or current controlled current source representation. जोन से भी है, you always place the resistor small R0 between collector and emitter terminals, and R0 is VA divided by IC prime. VA is called early voltage, IC prime is the current, collector current, DC collector current without early effect. So हमने क्या अचीव किया है, ये सारा जो प्रोसीजर हमने किया है उसके बेसिस पे we have achieved a generic procedure for the analysis of BJT amplified circuits. So क्या की steps हैं उस generic procedure को apply करने के लिए? The first step is to draw the DC equivalent circuit. So DC equivalent circuit आप कैसे draw करते हैं? By suppressing the AC sources. So DC equivalent circuit को draw करते हुए you will suppress the AC sources. Independent AC sources को आप suppress करेंगे. अगर voltage source है, AC voltage source है, तो उसकी voltage को आपने 0 set करना है. अगर AC current source है तो उसके current को आपने 0 set करना है. So you suppress the AC sources, you draw the DC equivalent circuit, you perform the DC analysis, you determine all node voltages and branch currents. So तमाम node voltages और branch currents आप निकालेंगे under the assumption of active mode, and then you verify that active mode. आपने verify भी करना है कि active mode ही होना चाहिए. अगर active mode है
तो it's fine, otherwise you reanalyze the circuit in some under some other assumption. लेकिन नोट करें कि अगर आप एम्पलीफाइड सर्किट बनाना चाह रहे हैं और ये सारा बकिया प्रोसीजर लगाना चाह रहे हैं तो द ट्रांजिस्टर हैज़ टू बी इन एक्टिव मोड because active mode is the only one suitable for amplifier application. So the first step is to draw the DC equivalent circuit by suppressing the AC sources, perform the DC analysis, determine all node voltages and branch currents, verify that the BJT is in active mode. The second step is to determine the small signal model parameters. So small signal model parameters आपके पास BJT के केस में क्या क्या small signal model parameters हैं? You have GM, GM is IC over VT. You have RPi, RPi is beta over GM. You have RE, RE is alpha over GM, and you have R0, which is VA divided by IC prime. To keep this generic, इसके गिर्द इसकी हम magnitude लेंगे क्योंकि VA आप recall करें is negative for a PNP transistor. So this relation is now valid for both types of transistors. अगर आप VA का magnitude ले लें तो ये अब relation valid है दोनों तरह के transistors के लिए. So ये small signal model parameters you can determine them once you are done with the DC analysis and have determined capital IC. You can readily determine these 4 small signal model parameters. The third step is to draw the AC equivalent circuit. So AC equivalent circuit का क्या मतलब है? AC equivalent circuit के केस में you will suppress the DC sources and draw the equivalent circuit. So AC equivalent circuit is just a circuit with DC sources suppressed. So DC sources को आप suppress कर दें और AC equivalent circuit draw कर लें. The next step is the small signal equivalent circuit. स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब ये है कि आप एसी इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांजिस्टर को उसके अप्रोप्रिएट स्मॉल सिग्नल मॉडल से रिप्लेस कर दें. ईदर यूज पाई मॉडल और टी मॉडल. एनी रिप्रेजेंटेशन में बी यूज्ड, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन और करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन कोई भी यूज की जा सकती है. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ योर प्रेफरेंस. दोनों तरह के रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व किया जा सकता है. अब आपने कौन सा मॉडल चूज करना है, पाई मॉडल या टी मॉडल? तो अगेन आप किसी भी मॉडल से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इट इज ईजियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग पाई मॉडल इफ एमिटर टर्मिनल इज डायरेक्टली ग्राउंडेड. आप एसी इक्विवेलेंट सर्किट को केयरफुली देखें. अगर एमिटर टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंडेड है तो देन द प्रेफरेंस इज द पाई मॉडल. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ ईज. एंड अदरवाइज अगर एमिटर टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंडेड नहीं है तो देन वी प्रेफर टू चूज द टी मॉडल. Actually, any model can be used to solve the problem, but it is just a matter of convenience, a matter of ease, that usually the problem is easier to solve if we use pi model when we find out that the emitter terminal is directly grounded in AC equivalent circuit. So हम AC equivalent circuit को observe करेंगे, AC equivalent circuit को हम देखेंगे, और अगर हम देखते हैं कि AC equivalent circuit में emitter terminal directly grounded है तो our preference will be the pi model. अगर हम देखते हैं कि एमिटर टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंडेड नहीं है तो देन द प्रेफरेंस वुड बी द टी मॉडल. सो बेस्ड ऑन कि एसी इक्विवेलेंट सर्किट की क्या सिचुएशन है, यू विल मेक अ डिसीजन वेदर टू यूज द पाई मॉडल और द टी मॉडल. पाई मॉडल इज यूज्ड व्हेन एमिटर टर्मिनल इज डायरेक्टली ग्राउंडेड. टी मॉडल इज यूज्ड इन ऑल अदर सिचुएशंस. एंड यूजिंग द अप्रोप्रिएट स्मॉल सिग्नल मॉडल you will draw the complete equivalent circuit. So that complete circuit will be called the small signal equivalent circuit. और उसके बाद small signal equivalent circuit की आप analysis करेंगे और different amplifier parameters निकालेंगे like gain, input resistance of the amplifier, output resistance of the amplifier, etc. इन parameters को हम formally define करेंगे next lecture में कि Rin को आप किस तरह exactly determine करते हैं और आउटपुट रेजिस्टेंस कैपिटल R0 को आप किस तरह एग्जैक्टली डिटरमिन करते हैं, दैट वी विल एस्टैब्लिश इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो दिस इज आवर जेनेरिक प्रोसीजर. सो ये जेनेरिक प्रोसीजर है जो कि हम बीजेटी एम्पलीफायर सर्किट प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं और इस जेनेरिक प्रोसीजर की मदद से वी विल डिटरमिन कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे आएगी. सो ये जेनेरिक प्रोसीजर जो है आपका डिफाइंड है with key steps. You start with DC equivalent circuit, then you determine small signal model parameters, then the AC equivalent circuit,
then you draw the small signal equivalent circuit, and finally you perform the analysis on the small signal equivalent circuit to determine different amplifier parameters like the gain, the input resistance, and the output resistance. So next time we will do some problem solving and apply this generic procedure and see कि ये generic procedure किस तरह से apply किया जा सकता है to solve amplifier problems, BJT amplifier circuits को किस तरह से आप solve कर सकते हैं using this generic procedure. So next class में हम कुछ problem solving करके देखेंगे कि इस generic procedure को किस तरीके से apply किया जा सकता है. ये कुछ equations हैं जो अपने जहन में रखनी है. GM is IC over VT, RE is alpha over GM, R pi is beta over GM, R naught is VA magnitude divided by IC. And since DC analysis में हम usually early effect को हम ignore कर रहे होते हैं, तो IC prime and IC are the same for the purpose of DC analysis. ये आपके चार small signal model parameters हैं. R pi is beta plus 1 times RE and alpha is beta by beta plus 1. तो ये रिलेशंस आपकी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होनी है, तो ये आपके जहन में होनी चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए. सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू सम प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सी कि ये जेनेरिक प्रोसीजर जो भी हमने डेवलप की है इसको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है टू सॉल्व द प्रैक्टिकल बीजेटी एम्पलीफायर प्रॉब्लम्स. सो आज के लेक्चर हम यहाँ पर एंड करेंगे. नेक्स्ट टाइम हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करके देखेंगे और आज की जो डेवलपमेंट हमने की है उसको हम अप्लाई करके देखेंगे. जी, एनी क्वेश्चन टुडेज लेक्चर?